अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हर चैप्टर यानी एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। उसमें बहुत सारा कैटेगरीज आता है, जिस तरह एटीट्यूड, कंपोनेंट, जॉब एटीट्यूड, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन। तो उसके बाद थ्री कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड, उसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर। तो सबसे पहले कॉग्निटिव ओपिनियन और बिलीफ segment of an attitude, a description of the way things are. उसके बाद affective, the emotion or feeling segment, the more critic part that set the tongue of the attitude. Your behavior and intentions to behave in a certain way towards someone or something. फिर उसके बाद एटीट्यूड एंड बिहेवियर, उसमें जो आता है एक कॉग्निटिव डिसोनेंस और एक मॉडरेटिंग बिहेवियर। तो पहला वाला जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन टू और मोर एटीट्यूड्स और बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। उसका की आइडिया, इंडिविजुअल्स आर uncomfortable with inconsistency and attempt to reduce it. Reducing dissonance depending on the importance of the events involved. Degree of influence we believe we have reward associated with the dissonance. उसके बाद मॉडरेटिंग वेरिएबल में उसका इम्पोर्टेंट एटीट्यूड reflecting or value have a stronger link to behavior. Accessibility, attitude we frequency recall, predict behavior more easily. Social pressure, descriptions occur when social norms override personal attitude. Direct experience, strong attitude behavior link when we have personal experience. उसके बाद आता है मेजर जॉब्स एटीट्यूड। उसमें कुछ पार्ट्स हैं इस तरह के, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, रिसीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, POS, एम्प्लॉयर एंगेजमेंट। उसके बाद आता है डिफाइनिंग एंड मेजरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। हाउ टू जॉब सेटिस्फेक्शन मेजर? सिंगल global rating, response answer one questions. One thing consider, how satisfied are you with your job? Rate on a scale from 1 high dissatisfaction to 5 highly satisfied. You cannot time consuming, free time for other tasks. And second, summation of job factor. Identify the elements, nature of work, supervision, pay, promotion, operative needs, and colleague relations. Respondents rate each on the standard scale. Scores are submit. Pinpoint specific problem area. Help managers address issue quickly. इसके बाद पूरा शॉर्ट में बताएंगे व्हाट कॉज ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। सबसे पहला आता है जॉब कंडीशंस, पे, पर्सनैलिटी और सेल्फ रेगुलेशंस,
corporate social responsibility, CSR, एंड उसके बाद आता है आउटकम ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, तो उसमें जॉब परफॉर्मेंस, उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर, OCB, एंड लास्ट लाइफ सेटिस्फेक्शन। उसके बाद आता है इम्पैक्ट और जॉब डिससेटिस्फेक्शन, एग्जिट वॉइस, लॉयल्टी, नेग्लेक्ट। ये 4 चीज़ जिसमें क्या होता है, जॉब डिससैटिस्फैक्शन का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहता है। हमारा इसी तरह 8 नंबर चैप्टर खत्म होता है।